हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। आज इंडेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करबा फर्स्ट वीडियो। जेमती हमर पुराना ट्रेंड चलची 1 मार्क रो 3टा क्वेश्चन, 4 मार्क रो गोटे क्वेश्चन और 6 मार्क रो गोटे क्वेश्चन, एंती गोटे गोटे वीडियो बनबो। एंती टोटल प्रति चैप्टर रो 4टी लेके वीडियो बनबो हमर, राइट। या पूर्व डिटरमिनेंट, मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन अपलोड हे सारची। एंड नाउ दिस इज इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। जदि चैनल रे नुआ आछन देन चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिवे। Telegram group join करें, PDF को डाउनलोड करिए। Okay, so let's start with the video, and that is question number 1. Evaluate 3 plus cos x plus tan square x divided by 2x plus sin x plus tan x. Numerator जो tan x अच्छी, हम करें देखो 3 plus cos x, tan square x को लेकर तो x square x minus 1. Tan square x can be written as x square x minus 1 divided by x square x minus 1 divided by 2x plus sin x plus tan x. Now this will become this 3 and this minus 1. 3 और minus 1 की 2 हो गया plus cos x plus x square x divided by 2x plus sin x plus tan x. Now या को t नहीं दिया, डिनोमिनेटर को t सब्स्टिट्यूट कर दो। कहीं यार न्यूमरेटर है, यार डेरिवेटिव देखा जाओ plus tan x is equal to t. Now, derivative of 2x will be 2, derivative of sin x is cos x, and derivative of tan x is x square x into dx equal to dt. So the numerator is dt, divided by denominator is t, and 1 by t का integration log t, right, plus c. So this is equal to log of mod of t. T is equal to 2x plus sin x plus tan x plus c. This is the answer. Direct भी कर पारिबे। ऊपर अछि f dash x, तळे थियो f of x. If numerator is f dash x, denominator is f of x, then you can write this as log of f of x plus c. एटा होछि तार फार्मूला। ठीक अछि, ये फार्मूला रे भी अपन डायरेक्ट कर पारिबे। आपको सेकंड स्टेप ऑनवर्ड्स। तो एटी हमर सेकंड स्टेप, एटी अपन देखा जाउची यार डेरिवेटिव ये, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव न्यूमरेटर, तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिख परिबे डायरेक्ट। शॉर्ट क्वेश्चन अछि, एते के देखिबे, राइट। नाउ कम टू योर सेकंड क्वेश्चन। व्हाट द सेकंड क्वेश्चन इज इवैल्यूएट cot x divided by log of tan x. So substitute log of tan x, log of sin x को t पुट करिवे। When log of sin x equal to t, differentiate करिवे दोनों साइड। log of sin x, derivative of log of sin x is 1 upon sin x, and sin x का derivative होता है cos x into dx equal to dt. तो cos x upon sin x will become cot x into dx is equal to dt. तो देखो तो numerator कौन थिला, numerator थिला cot x into dx, and that becomes dt, denominator becomes t. तो 1 by t रो integration, 1 by t रो integration होचे log of mod of t plus c. So this is equal to log of mod of t. What is t? Log of sin x, log of sin x plus c. So this is what the second question is. Came in 2011 examination, right? Now let's move to one more question. Now the next question is dx by cos square x into sin square x. तो देखो डिनोमिनेटर cos square x sin square x और न्यूमरेटर 1 अछि। सो द न्यूमरेटर 1 को हमें sin और cos रो फॉर्म रे लिखबा। सो 1 can be written as cos square x plus sin square x divided by cos square x into sin square x, cos square x into sin square x. Now इसको सेपरेट करिया। ऊपर फर्स्ट टर्म हो गला cos square x divided by cos square x into sin square x into dx, plus second one is sin square x divided by cos square x into sin square x, cos square x into sin square x into dx. So here cos square x gets cancelled, here sin square x gets cancelled. So this is equal to integration of 1 by sin square x into dx plus integration of 1 by cos square x into dx. So 1 by sin square can be written as cos square x into dx plus 1 by cos square x can be written as x square x into dx. So cos square x को integration होचे minus cot x, and sec square x रो integration होची plus tan x. So minus cot x plus tan x plus c. So this is the final answer.
Okay, now let's move to the next question. Numerator is 2x plus 1, denominator x square plus 10x plus 29. Equal standard form hochi. Standard form hochi px plus q is equal to a into d by dx of denominator. Denominator मतलब quadratic जो था थी वो ax square plus bx plus c plus b. This is the standard form. This is the standard form. ऊपर जदि आपनकर linear polynomial अछि आ denominator अछि quadratic polynomial root भीतर था कि root बाहर था दुईटा जगह पे this is the standard form. तो 2x plus 1 equal to a into d by dx of quadratic, that is x square plus 10x plus 29 plus b. Now this is equal to a into x square derivative 2x, 10x derivative x square derivative 2x, 10x derivative 10, 29 derivative 0 plus b. Now this is equal to 2ax plus 10a plus b. Now equate करेंगे coefficient को x और coefficient to x और coefficient 2a. Therefore 2a is equal to 2. Therefore a becomes 1. And constant term 10a plus b equal to right side of constant term 1. So 10 into a value 1 plus b equal to 1. So b is equal to 1 minus 10 equal to minus 9. So a value है 1 और b value है minus 9. Now the integral I can be written as I को कैसे लिखिए I equal to integration of a into what is a 1 into d by dx. D by dx is 2x plus 10 plus b is minus 9 divided by the denominator. Denominator is x square plus 10x plus 29, right? Yeah, square into dx. Now convert into two integrals. First integral is 2x plus 10. 2x plus 10 divided by square root of x square plus 10x plus 29. The first integral is this. Minus 9 constant बाहर को निकले 1 divided by this is x square plus 10x. 25 plus 4 कर दिया तो 29 को. So देखो first term क्या बोला denominator f dash x फॉर्मूला देखो ऊपर है f dash x denominator root of f of x into dx equal to 2 times root of f of x. नथिले denominator जोड़ा अच्छे सेटा को t करके t substitute करके भी करी पारे जदि ये फॉर्मूला मन ना ये फॉर्मूला मन नथिले denominator जिनसटा को t करके also you can do. ठीक है. So this is 2 into root of x square plus 10x plus 29 minus 9 taken outside. This is integration of first three terms. प्रथम तीन term कौन है x plus 5 whole square है. Now that 9 25 plus 4 29 को 29 25 plus 4 कर दो अब 4 को लिख दो 2 square, right? So 1 divided by x square plus a square. So this is equal to 2 into square root of x square plus 10x plus 29 minus 9 into 1 by root of x square plus a square. Huh? So formula is log of x plus square root of x square plus a square. मतलब x square plus 10x plus 29 plus c. ये है आंसर. ओके एटा होतो स्टैंडर्ड याकू मन रखले संबंध, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन 1 by 2 cos square x plus 3 cos x. केमति करबा देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय cos x कॉमन आसीबो cos x कॉमन आसला पर बनिबो 2 cos x plus 3 2 cos x plus 3 into dx. Now this 1 can be written as 1 को कौन लिखा 2 cos x plus 3 केमति लिख देले minus 2 into cos x 3 आछि 1 by 3 कर एबे 1 आसीबो डिवाइड बाय cos x into 2 cos x plus 3 into dx. Now याको हमें दीटा इंटीग्रल कन्वर्ट कर दो. First integral is 2 cos x plus 3 divided by cos x into 2 cos x plus 3 minus 2 into integration of cos x divided by cos x into 2 cos x plus 3.
2 cos x plus 3 this into dx. So from the first integral 2 cos x plus 3 2 cos x plus 3 cancel here. So this is 1 by 3 into integration of 1 by cos x which is your sec x. Here first integral. Now the second integral minus 2 into cos cancel हो गया. Integration of 1 divided by 2 into cos x. Cos x को लिखा हुआ 1 minus tan square x by 2 divided by 1 plus tan square x by 2 plus 3. So this is equal to 1 by 3 outside. Derivative integration of sec x is log of sec x plus tan x. Log of sec x plus tan x minus 2 into integration of numerator is 1 plus tan square x by 2 which is sec square x by 2 numerator and denominator is जो ऊपर multiply है 2 minus 2 tan square x by 2 plus 3 tan square x by 2 into dx. So this is equal to 1 by 3 into log of mod of sec x plus tan x minus 2 into integration of numerator is sec square x by 2 denominator 3 tan square x by 2 minus 2 tan square x by 2 will be tan square x by 2 3 plus 2 will be 5 this into dx. So this is equal to 1 by 3 into log of mod of sec x plus tan x minus 2 into 80 tan x को t पुट कर दे सॉल्व कर दो आपको आगे पुट tan x इक्वल टू t जब tan x को t कर दो tan x ର डेरिवेटिव होछि tan x by 2 राइट तो tan x ର डेरिवेटिव होछि sec square x by 2 into x by 2 रो 1 by 2 into dx equal to dt. So therefore sec square x by 2 into dx will be equal to 2 dt. तो न्यूमरेटर रहेगा 2 dt राइट तो डिनोमिनेटर कितना हो देखिए. So this is equal to 1 by 3 into log of mod of sec x plus tan x right. Now it is 1 by 3 log minus 2 times sec square x by 2 is 2 dt divided by t square plus 5 then plus 2 times sec square x by 2 into 2 dt divided by t square plus 5 ठीक अच्छे चेक कर दो करते let us check 2 into 2 dt divided by t square plus 5 and that is minus plus no এটা minus ठीक अच्छे ये होचे minus this is minus into dt. So this is equal to 1 by 3 into log of mod of sec x plus tan x minus 2 into 2 will be 4 integration 1 by t square plus 5 that is root 5 the whole square 5 को root 5 square कर दे. So this is 1 by 3 into first term will remain the same log of sec x plus tan x sec x plus tan x minus 4 into 1 by a tan inverse of x by a plus c. So this is equal to 1 by 3 into log of mod of sec x plus tan x minus 4 upon root 5 into tan inverse of t upon root 5 plus c. Now this t can be written as tan x by 2. t को कौन लिख दो tan x by 2 तो सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू tan x by 2 divided by root 5 plus c. So this is the final answer. এটা হচ্ছে 6 মার্ক কোশ্চেন ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন সব নেই আসছে আর এই কোশ্চেনটা কবে আসছিল জানেন দিস কোশ্চেন ওয়াজ কেম ইন 2019 রিসেন্ট কোশ্চেন প্রথমে cos x को कॉमन নেই গলে কোন মিললা 2 cos x plus 3 মিললা সেটা 82 cos x ଅଛି याको 2 रे मल्टीप्लाई करके माइनस कर देले 3 बढ़ला ऊपर किंतु हमको 1 दरकार तो 1 by 3 कर दे तब दुईटा इंटीग्रल करे तब सॉल्व कर दे. सेकंड इंटीग्रल जो आसला ये cos x को tan x रो हाफ एंगल फार्मूला रे कन्वर्ट कर दे फिर tan x by 2 को t पुट कर दे क्वेश्चन खत्म ठीक अछि. तो एमती गोटे गोटे वीडियो नहीं आसी इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन पर डेफिनाइट इंटीग्रेशन तापर एप्लीकेशन तापर डिफरेंशियल इक्वेशन जति आपण माने चैनल रो नुवा अछन चैनल को सब्सक्राइब कर देबे लाइक कर देबे बेल आइकन को प्रेस कर देबे एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और ये सब पीडीएफ को अपन डाउनलोड कर पारिए. नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट नुवा वीडियो नहीं आसी इंटीग्रेशन 2 रो और से पर पाठ पढ़ता. बाय बाय एंड गुड लक.